Hello student, welcome back. This is Bharat Khuman from Mechanical Engineering Department. So student, today we are going to discuss about the diesel cycle, or we can say constant pressure cycle. So without a wasting of time, let's start today's session. Constant pressure process. Otherwise it is called isobaric process. So student, in this process the pressure remains constant. Now in the diagram there is a PV diagram. Okay, pressure versus volume. Now here the state A and state B. Here state A represent initial state and B represent final state. The process will start from initial state and end to final state. During this process the pressure remain constant. Here we can see in the diagram also. यहाँ पे फिगर के ऊपर से भी देख सकते हैं कि एक बाउल है. अब जो एयर है उसके अंदर उसको क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं. ठीक है, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अदरवाइज बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस. A diesel engine work on diesel cycle. Diesel engine is based on constant pressure process. Only fresh air is drawn during suction stroke. मतलब जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल के ऊपर काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे काम कर सकता है. अब जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर ही जाती है. फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड. इफ वी टॉकिंग अबाउट अ डीजल इंजन, हियर फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड. इफ वी टॉकिंग अबाउट अ ऑटो इंजन और पेट्रोल इंजन, सो स्पार्क प्लग इज यूज्ड. नाउ कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन रेशियो इज अबाउट 15 to 25. 15 से लेके 25 तक इसका कंप्रेशन रेशियो रहता है. द मैक्सिमम प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक इज अबाउट 35 बार. कंप्रेशर स्ट्रोक के बाद जो मैक्सिमम प्रेशर मिलता है वो अराउंड 35 बार जितना रहता है. नाउ कंबशन टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर. द फ्यूल इज इग्नाइटेड व्हेन स्प्रेड इनटू एयर एट अ high temperature of about 600 degrees centigrade after compression stroke. High compression ratio causes a difficult to start, where in Otto cycle the compression ratio is less compared to diesel cycle. It is a heavy and costly due to high maximum pressure in this cycle. Diesel engines are low speed engines. It occupies more space. And the thermal efficiency is around 40%. थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन के कंपेयर में कितनी है, ज़्यादा है. जबकि पेट्रोल इंजन में कितनी रहती है, 25%, जबकि डीजल इंजन में रहती है 40%. इट जनरली यूज्ड इन बसेस, ट्रक्स, अर्थ मूविंग मशीन्स एंड अदर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स. वर्किंग प्रोसेसेस. सो स्टूडेंट, here there is a PV and TS diagram. There is a total 4 process. Process 1-2 represent the isentropic compression. Process 2-3 represent the constant pressure heat addition. Process 3-4 represent the isentropic expansion. And process 4-1 represent the constant volume heat rejection. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है. डीजल साइकिल है जहाँ पे एडिशन ऑफ हीट कांस्टेंट प्रेशर के साथ होती है, ठीक है, जबकि जो हीट है वो रिजेक्ट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ. ये वी कैन सी इन द डायग्राम. इफ वी टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस 1-2, एट दैट टाइम द प्रेशर विल इंक्रीज फ्रॉम P1 to P2. Even the temperature is also increased from T1 to T2. Now process 2-3 is constant pressure heat addition process, where
P2 is equal to P3 means pressure remain constant, but टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, T2 से T3 तक जाएगा. Now process 3-4, it represent the isentropic expansion, so pressure will down from P3 to P4. Last but not the least, rejection of heat during process 4-1. So we can say the constant volume heat rejection. A diesel cycle consists of 4 processes, 2 isentropic reversible adiabatic processes and 1 isobaric means constant pressure process and 1 isochoric means constant volume process. Process 1-2 isentropic compression. Student, here we can see in the diagram, in this process the piston moves from bottom dead center to top dead center position. Air undergoes reversible adiabatic isentropic compression. We know that the compression is a process in which volume decreases and pressure increases. Hence, in this process, volume of air decreases from V1 to V2 and pressure increases from P1 to P2. Even temperature increases from T1 to T2. As this an isentropic process, entropy remain constant. Student, here we can see in the diagram के अंदर देखो वहाँ पे क्या है, जो एंट्रोपी है वो क्या है, कांस्टेंट है. बट वो कब कांस्टेंट होगी, जब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा V1 टू V2, प्रेशर इंक्रीज होगा P1 टू P2 एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्रॉम T1 टू T2 एंड एज यूजुअल एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट. Process 2-3 constant pressure heat addition. Here piston remains at a top dead center for a moment. Heat is added at constant pressure. P2 is equal to P3. Student, here we can see in the diagram during process 2-3 P2 is equal to P3 from an external heat source. The temperature increases from T2 to T3, volume increase from V2 to V3 and entropy also increase from S2 to S3. Process 3-4 isentropic expansion. In this process, air undergoes isentropic or reversible adiabatic expansion. The piston is pushed from top dead center to bottom dead center. Student, here we can see in the diagram. The pressure decreases from P3 to P4, volume rises from V3 to V4, temperature falls from T3 to T4 and entropy remains constant. S3 is equal to S4. Here we can see in the diagram. Student, last process, that one is process 4-1, constant volume heat rejection. The piston rests at BDC for a moment and heat is rejected at constant volume. Here we can see in the diagram where volume remains constant during process 4-1. This process, pressure falls from P4 to P1. Temperature decreases from T4 to T1. Entropy falls from S4 to S1. So student, in this process, volume remain constant, then pressure, temperature and entropy falls. Now student, process 2-3. Process 2-3 is nothing but the heat supplied at constant pressure. Okay, and process 4-1 is nothing but the heat rejected at constant volume. Student, heat supplied and heat rejected दोनों की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क डन और एफिशिएंसी. नाउ if we talking about a process 2-3, heat supplied, the equation will be mCp T3 minus T2. Now where m is represent mass and Cp is represent specific heat at constant pressure. Process 4-1, rejection of heat at constant volume.
mCv T4 minus T1, where m represent mass and Cv represent specific heat at constant volume. So student, kindly attempt this mind twisted question and find a following link in a description box. सो स्टूडेंट, आज का ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपकमिंग सेशन के अंदर हम देखेंगे सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।